Hello everyone, I think I'm live now. There was some because of which I wasn't able to go live. I hope it is all good to go now. Um, चलो एक बार मुझे बता दो if you are able to hear me properly and see me properly. I'll share it on Instagram as well that we are live now. Good afternoon. Welcome to the session. Good afternoon to all of you. Welcome to Crack Grade B. कुछ और क्वेश्चन सेंटेंस एरर डिटेक्शन के एंड करेक्शन के हम करेंगे एंड आई बिलीव यू पीपल विल अगेन एंजॉय द सेशन. आप लोग यहाँ आंसर करते रहना है एंड यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी रूल्स वर्किंग इन अ डिफरेंट मैनर. आपको और ऑब्जर्व करने का पावर बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस क्विकली. तो हम टाइमर के साथ यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इन अ मिनट. आप लोग फटाफट लाइक और शेयर कर दो. इफ यू आर न्यू हियर ऑन द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल. That's our first question. You have to answer A, B, C, D. कौन सा ऑप्शन है? Plus, if you can give me the correction, that would be great. Corrections. Several prominent lawmakers, several है तो plural आया, had criticized Wednesday का violence because यहाँ पर हम आगे कोई noun नहीं पाते. Violent is an adjective. So violent क्या है ना? Violent action, violent reaction. So here we are not getting any noun. So adjective कोई काम का नहीं. Wednesday का violence and in the aftermath more officials. अगर एक ही ऑफिशियल एक्स्ट्रा होता तो वन मोर ऑफिशियल बोलते हम. वील हैव टू स्पेसिफाई वन मोर या फिर अनदर ऑफिशियल, बट मोर बोला है यहाँ जनरल कॉन्टेक्स्ट में एंड दैट्स द रीजन यहाँ प्लूरल आना चाहिए. मोर ऑफिशियल्स handed in their resignation. Hand in karna means to submit. Okay, so that's the reason hand in yahan phrasal verb hai and it's absolutely right. When you hand over something, you transfer your responsibilities, your power to somebody else. तो हैंड ओवर होता है जब गवर्नमेंट बदलती है, मिनिस्टर बदलते हैं, सो दे हैंड ओवर देयर पोस्ट, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी एल्स. बट यहाँ पे इट्स द रेजिग्नेशन, इट्स लाइक सबमिटिंग द रेजिग्नेशन. सो हैंड इन बी इज एब्सोल्युटली राइट. ओके. बी, yeah, because we are using past perfect here because it is about something that happened long back and the story is over now. So had criticized, this happened in the past, got over in the past, so it's okay to use past perfect. You can also use simple past tense, but वो error नहीं है ना.
correction. In late months, now not late, in recent months we will say, late, later, latest, यहाँ पे या late latter वो वाला form का use होता है, but here we cannot get the context of it. So in recent months he has faced, this is present perfect, so better to use recent over here. Weekly protests calling on him, demanding to resign over the allegation. Resign का reason बता रहे हैं. To resign over, and the reason is mentioned. Resigned over the allegations and the government's handling. Now this is your gerund है ना? Handle करने के action को बोल रहे हैं. Otherwise it will mean that handle जो हमारी बाइक या किसी डोर का होता है. So government's handling of the coronavirus crisis. Only A had error. Okay. The tax is levied on, ये जो है लेना टैक्स को, it's levied, that's how we say it, and that is किसी पर लिया जाता है. तो on definitely is one of the errors. ये ऑप्शन तीन ऑप्शन चले जाते हैं. Now you have to check D. रादर अपने साथ THAN वाला देन लेता है. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, दिस नेवर चेंजेस. तो यहाँ पे एक डेफिनेट एरर है मेरे पास में. A and D आपका आंसर हो जाता है. क्वाइट इजी. With no permanent establishment in India, टैक्स के लिए इज आया है वापस से. अप्लाइड ऑन रेवेन्यू रादर देन इनकम. यूक्रेन कॉल्ड ऑन ईरान टू डिलीवर जस्टिस. मांग करना है ना. जस्टिस एंड पे टू डिलीवर, टू के साथ पे फुल कॉम्पनसेशन इनको टू द फैमिलीज इनकी ऑफ दोज के लिए हुआ आया है who died in the plane shut down. शॉर्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है. एंड प्लेन कैसा था, जो कि शॉट डाउन करा गया था बाय इरानियन गार्ड्स. तो हम यहाँ पे प्लेन को समझाने के लिए वर्ब थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, which we usually do, like class taken by Niharika ma'am, exam given by students, taken by students, क्वेश्चंस गिवन बाय निहारिका मैम. तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं प्लेन के साथ में, वो शॉर्ट क्यों आया है, वाई नॉट एनी अदर फॉर्म, क्योंकि शूट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, शॉर्ट. ओके. Okay, yes, do like the session, share the session and focus अपने questions करने पे, क्योंकि we need to be very confident when we answer our questions.
फोकस के बिना नहीं हो पाएगा। आंसर इज ओनली बी। छोटा सा सेंटेंस है, कितना टाइम लग रहा है, नहीं लगना चाहिए इतना। volcanoes have been quiet। अभी volcano inactive या dormant होता है, उसके लिए थर्ड वर्ड भी है to express that it is dormant, that is quiet। okay, of course not literally quiet but inactive है basically। so volcanoes that have been quiet for decades, volcanoes are rumbling to life in the Eastern Caribbean, prompt करते हो official को to issue alerts। okay, so only the B part had error। quite is an adverb and it means very। so the music is quite loud। this very when is not used in a good sense, तब हम usually quite का use करते हैं, but ठीक है, quite positive में भी use होता है, ऐसा नहीं कि केवल negative में। करो, पढ़िए प्रॉपरली क्या बोला है करने के लिए। You need to tell me the error wherever you feel there is an error। tell me मैम this is sentence number 1, इसमें ये error है, this is second, इसमें error है। ठीक, एटलीस्ट आप करेक्ट करो, गुड। फाइनल आंसर इज बी। so first and second you were supposed to mark the one जो grammatically correct है। when wildland is developed, humans are creating a paradise, ऐसे unwittingly creating a paradise for pathogen carrying ants। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, इट्स ऑल ओके, वी कैन गो अहेड विद दिस स्ट्रक्चर। एज नेचुरल स्पेस इज कन्वर्टेड टू cropland, pastures, etc., certain animals
like pigeons and rats thrive. Animals है तो thrive वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही। तो आपके पास से फर्स्ट और सेकंड तो होने ही चाहिए, दो ऑप्शन ही बचते हैं। These all options are out. These species, species वर्ड प्लूरल में भी species होता है और सिंगुलर में भी species ही लिखा जाता है। So these species are more likely to carry pathogens that can spread from humans and cause widespread disease. लेकिन हम यहाँ पे these species carry pathogens है, तो ये humans से क्यों हम कर रहे हैं? अगर आपके पास में होता कहाँ से किसको जा रहा है, तो आपके पास में क्लैरिटी होती कि फ्रॉम दीज एनिमल्स टू समवन एल्स। पर यहाँ पे तो केवल हम ये बता रहे किसको पहुंच रहा है, तो फ्रॉम का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे आपको सेंटेंस से समझना था कि वी कैन नॉट से पैथोजेंस, हाउ पैथोजेंस आर फाउंड इन ह्यूमंस ना, हम में से कैसे फैलेंगे। So that's why pathogens can spread to humans and cause widespread disease. Exactly. अगला करो, think and do. कुछ नहीं मिल रहा है एरर। Okay, see, with the exploitation of natural spaces, with something happening, animals that require specialized habitats, अलग अलग animals के habitats अलग अलग हुए। So in the first one you should be using a plural, and animals like rhino suffer, animals के लिए suffer आया है। So definitely first में error है, तो तीन option फट 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 आपके cancel हो गए। The second one says, meanwhile, animals like rodents, etc., more easily adapt. Animals adapt to, adapt अपने साथ to लेकर चलता है। Human dominated environment, second is correct. These animals are able to reproduce, कैसे quickly, adverb है, and live, able to live all over the world, meaning they can के साथ में verb का first form, human dominated आएगा। Very good, क्योंकि हम यहाँ पे environments जो कि noun है, to explain this word we are using verb third form past participle as adjective. So answer is only two. Here it should be plural, here it should be proper form of adjective, verb third form as adjective, second one is error free. Okay? In the question, three sentences are given. Decide which of the sentences are grammatically and meaningfully correct and mark the answer accordingly. ये आपका instruction है यहाँ पर, right? Odd one out का question तो different होता है, उसमें फिर grammatical errors नहीं मिलते हैं आपको. That is a separate type of question.
Do like and share the video, the session. Okay. Correction बताओ. Eyes and nostrils. Correction क्या होना चाहिए? Okay. करेक्शन और दूसरे जो करेक्शन है. चलो. To your surprise, answer is that there is no error. All of them are correct sentences. तो अभी क्या हुआ? You overthought it. You thought अरे कुछ तो निकलना चाहिए, 3 सेंटेंस है. Come on, be confident. नहीं है तो नहीं है. कैसे कॉन्फिडेंट होगे? देखो यहाँ पे, है ना. मोस्ट अमेरिकन क्रोकोडाइल्स प्लूरल है, ज्यादातर क्रोकोडाइल्स बोल सकते हैं. Don't need to look far to find the feature. Feature singular है तो sets आया them apart from Nile crocodiles. Nile नदी का नाम है लेकिन हम the Nile नहीं बोलेंगे because we are talking about crocodiles. We are not talking about the river itself. Okay. The difference lies singular right between के साथ and आता है their eyes and their nostrils. क्योंकि we are comparing American crocodiles and then the other side we have Nile crocodile. Feature as a noun use हुआ है, noun के लिए sets verb आया है. Okay. Then I'll get back to this question, Tanya. Let me explain third one, फिर मैं आपको समझाती हूँ, है ना. Of crocodiles living today means out of total crocodiles living today, only the 4 species that live in the Americas have. 4 है तो इसलिए have आया. A small bump in the middle of their snouts. Snouts मतलब वो जो उनका nose जैसा निकला होता है. Now please understand, थर्ड में अमेरिकाज गलत लगा तो आपने थोड़ा सा अगर रीडिंग और ज़्यादा करी होगी तो यू शुड नो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए शॉर्ट फॉर्म द अमेरिकाज यूज होता है बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल. इस वजह से कई बार स्टेट्स बोलते हैं द अमेरिकास, मतलब आप तीनों के बारे में बात कर रहे हो एंड दैट्स व्हाई वो एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल वोकैबुलरी है. बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है यूएसए के लिए. ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है, मोस्ट और मैनी में कंफ्यूजन होता है. एक्चुअली मोस्ट का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है. ओके, व्हेन आई से मोस्ट स्टूडेंट्स don't like error detection, and if I say many students don't like error detection, so is there any difference जो कि meaning wise आया? Slight difference आया, दोनों के साथ plural लगा है, right? When I say most को आप uncountable के साथ भी use कर सकते हो. Here is the difference. अभी मैं बोल रही हूँ many students liked this session, most students like this session. तो कहने के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है वहां पे. मोस्ट बोल रहा है मे बी 95% ने लाइक करा. मैनी इज अ जेनेरिक वर्ड, सो यू डोंट हैव टू चेंज मोस्ट टू मैनी और मैनी टू मोस्ट अनलेस एंड अनटिल वो कॉन्टेक्स्ट बहुत ही स्पेसिफिक हो, जो कि बहुत कम होता है एग्जाम में. ऐसा कि यू विल हैव अ specified context where only most is working with plural and many cannot come. So this is not something where you should be having any confusion. Okay. This definitely keep in mind that if you have an uncountable noun, फिर आप many लगा नहीं पाओगे, which is a basic rule, right? मीनिंग ही अलग होते हैं.
क्यों बदलना है किसी चीज को? इफ यू फील इट इज रॉन्ग और इफ यू आर एक्चुअली हैविंग अ रीजन. आंसर इज देयर आर टू करेक्ट सेंटेंसेस, फर्स्ट एंड द थर्ड वन. जो गलत है पहले वो देखते हैं. A study suggests that on two instances, है ना? तो on not in, हम instances मतलब दो अलग अलग actions हुए, events हुए, उनकी बात कर रहे हैं. ओके, तो instant नहीं है, instance है. So on is not wrong over here. Monkeys made their way across the ocean on floating vegetation. वेजिटेशन जो फ्लोट होता हुआ है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दोस आइलैंड, नॉट आइलैंड टिपिकली, पर वो कुछ सी में उगने वाले प्लांट्स होते हैं. वो इकट्ठे इकट्ठे हो जाते हैं एक बड़े से शिप जितने साइज में, एंड देन इट कीप्स ऑन फ्लोटिंग, एंड थोड़ा बहुत उनके ऊपर वजन भी होता है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एनीवेज, तो वेजिटेशन कैसा है? फ्लोट होता हुआ. तो फ्लोटिंग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, इमेजिन देर इज अ प्लैंक, ओशन के ऊपर एक प्लैंक है, और ये जो मंकीज हैं वो क्रॉस कर रहे हैं ओशन ऑन दैट प्लैंक. ओके, तो दैट्स वाई सेकेंड में एरर था. यहाँ अराउंड नहीं आएगा. हाउ कैन अराउंड बी यूज? ओशन की बात हो रही है, तो अक्रॉस द ओशन यहाँ पे सही प्रपोजिशन आना था. Crocodiles are also not the only flightless animal thought to have reached the new world by crossing the Atlantic Ocean. So the आएगा यहाँ पे. The continents were about the same distance apart 7 million years ago as they are today. तो यहाँ पे कोई error नहीं है. Now there is an extra detail. Making the journey across the ocean, ये आपके पास hint था by the way question में. Quite a feat, okay, quite a success, but not impossible. तो यहाँ हाइफन के साथ हमने एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज बोली है बट लगाकर. अगो एडवर्ब है. अगो एडवर्ब है तभी मैं ईयर्स प्लूरल लिख पाई हूँ यहाँ पर, है ना? Even if you have a silly doubt you can ask, so that अभी क्लास में we can have many things जो कि आप सीख जाओगे. Otherwise later on it becomes really difficult. Okay. One of you is correct. Little bit of more time and then show you. There is only one. Most ants work in a kind of caste society, dividing labor among morphological subtypes within a colony. Within something work in a kind of, so everything is good to go here. In the leaf cutter species, अब उसका नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है. For instance, this is now for example.
Smaller worker ants टेक केयर ऑफ फंगस ग्रोइंग ऑन. देखो लीव्स के अंदर का तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना, लीव के अंदर क्या है, जस्ट द कलर, द पिगमेंटेशन ऊपर ही होगा, तो ऑन डिकेइंग लीव्स इनसाइड द कॉलोनी व्हाइल लार्जर वर्कर्स फोकस ऑन डिफेंडिंग द कॉलोनी. ओके, तो यहाँ ऑन आना था सिंपल प्रपोजिशन का. यहाँ पर यूज करा गया स्मॉलर इज यूज टू इन्फॉर्म साइज ऑफ, या स्मॉलर वर्क करने वाले एंड्स एंड लार्जर, तो स्मॉलर एंड लार्जर उन्हीं का कंपैरिजन आपस में हो रहा है. But all of the ants work on cutting and bringing parallelism back fruit pieces, which puzzled scientists. अब puzzle कैसे करा? In a great manner. We need an adverb to explain this verb. That's why greatly आएगा. So that was correctly said by Priya. जिन्होंने यहाँ comment किया था. We need an adverb. And all those who have given the correct answer, these were the mistakes. Okay. थोड़ा सा टाइम लेकर देख लो, एक बार चेक कर लो. There is an error in all of the sentences respectively. Chinese conservatism is different. How? Markedly different from the conservatism of. Okay? किसी का कंजर्वेटिज्म है, किसी के लिए थोड़ी ना आता है. दिस इज द पॉलिसी somebody is following, ना. So doctrine of someone, strength of someone, conservatism that they are following of the modern West. So there was this error in the first one. Okay. The political term conservative came across during, came about का meaning होता है it was originated, उस समय I came about, come about. To come about is when something takes place, happens, originates. तो वहाँ पे about आना था. During revolution and inspired, past है came and inspired. Men Tonsei who were determined to preserve Christian and aristocratic elements kaha in the society. So rest of the part is all good to go. Chinese conservatism began around the time of Taiping Rebellion. अभी began है, everything is of past, sentences are somewhere interconnected, so we can see पुरानी बात है for sure, तो यहाँ has नहीं आएगा. Had its objectives the preservation of both the society and the feudal strains of pre-opium war. तो जितने नाम है उनको ना पढ़ो, capital वाले words ना पढ़ो, आगे चले जाओ, just think of them as ABC name.
है ना, x सपोज करके चलते हो ना मैथ्स में, डू दैट। तो यहाँ पे आपका वर्क इजी हो जाएगा इफ द क्वेश्चन इज दिस लेंथी। Hope there is no doubt. Move on to the next question. Okay. Again, आपको करेक्ट बताना है। वी हैव टू सेंटेंसेस हियर जो हमारे आंसर में है। द ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट उसको नाम दे दिया। ओके, हैज कम डाउन, हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अ मेयर 5%, मेयर क्यों सही है, एडजेक्टिव के समान। रेयरली तो तब होता ना व्हेन वी रिक्वायर एन एडवर्ब। नाउन परसेंट एज अ 5% एक नाउन के समान काम कर रहा है, तो मेयर यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाय दैट टाइम ढूंढो जरा थर्ड में क्या एरर है। Of the original 2 acres as a result of more than a century of continuous exploitation. Noun adjective, century के साथ अ लगा, बिल्कुल सही है। After more than a century of exploitation, the remaining old growth forest represents less than 5% of original 2 million acres. Now, in such questions, एक instruction आप देखोगे, there could be grammatical error, there could be idiomatic error, there could be some error that is lending like no meaning to the sentence. So अगर हम यहाँ पर देखें, from the original 2 million acres that the old growth forest covered, after more than a century of continuous exploitation, they have come down to represent only 5% of it. So here there is the structural error. क्या हो रहा है यहाँ पे? If I'm saying from, तो from का context क्या है आगे? From से to connected है, या किसी में से कुछ चीज़ ली जा रही है। ये दे किसके लिए यूज़ है? ये दे जो है वो हम acres के लिए यूज़ कर रहे हैं। They have come down to represent only 5% of it किसके लिए यूज़ करा जा रहा है? तो these ambiguities, these are the reasons जहाँ पे हमें exact एक noun के लिए pronoun नहीं मिल रहा है, respective pronoun दूर लगा है, so this is not the proper structure of the sentence, and that's why only first and second. Yeah, because we cannot connect no clarity से कि ये चीज़ इसके लिए बोली जा रही है।
I'll not give you exactly 1.5 minute for this because वो बीच में अभी stop हो गया था. Again, the correct one. In all sense, it has to be correct, okay? Structure, idiomatic way, when you have any grammar related thing. तो वो सारी चीज़ें देख के बताइए if anything that has. Cool. Answer is all are correct. मतलब तीनों तरीके से आप वो बातों को बोल सकते हैं ना. The statesmen of the restoration stretched. एक आइडियोलॉजी कैसी थी? वो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी थी. To its limits in an effort to do what? To make the Confucian system under new conditions. Make a system under some new terms condition. बिल्कुल बोल सकते हैं. They were true conservatives in a great tradition. इतना sentence खत्म हो गया. Now we are extending and explaining more things over here. So living in an age है time related है तो when आया. Age when revolutionary change as a noun was unavoidable. Okay, पर है तो living नहीं होगा ना. In the sense of stative verb, it depends what we are saying. See, we are saying this thing. This is the same kind of thing I think you asked yesterday. यहाँ पे sentence खत्म हो गया. This is not your main verb. I am living in इंदौर नहीं, I live in इंदौर होता है क्योंकि वहाँ live as the main verb use हुआ है. What is happening in second sentence? Your sentence is over here. They were conservatives in a great tradition. Now this participle, present participle as an extension we are using ताकि आगे के और objects को हम बता सके sentence के, and that's why this is what we have. Yes, आपको वैसे भी cap in your bank exams, just a few exams को छोड़ दो, but in like most of your bank exams, punctuations पे questions नहीं आते हैं, and we are saying restoration के पहले the, so we are talking about the restoration, and that's why वो R capital रहने दो, there is no problem in it. The aim of the restoration, the aim was to restore to their original vitality the best of the institutions. Okay, अब यहाँ पे पता है क्या हो गया in this third sentence, वो आपको गलत लग रहा होगा. Why? Because of the structure. क्योंकि restore something, पर restore something to which kind of state, uh, in what manner, तो आगे की डिटेल को पहले दे दिया. So restore the best of the ancient institutions. अभी restore in which sense? To their original vitality. तो ये किसको restore करने से पहले कैसे restore हो रहा है उसको हम पहले बता दे रहे हैं, and that's why यहाँ पे कोई error हमको नहीं मिलता है. These men of the restoration had enough foresight. Okay, so foresight enough हम नहीं बोल सकते. Whenever you use enough, first of all enough जो है एक adjective and adverb दोनों. So when you use enough with a noun as adjective वो पहले आता है.
enough time, enough questions, enough foresight. लेकिन if you are using it as an adverb, तो वो उस word जिसके लिए लगा है उसके बाद में आ, so you are going to say um, her project, her confidence is good enough. गुड एडजेक्टिव उसके पीछे इनफ आया, सो यहाँ पे इनफ पहले आना था टू डिटरमाइन दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू सिलेक्ट ऑफिशियल्स, कैसे ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलोन। सेकेंड है एज अ रिजल्ट, द रिजल्ट अ रिजल्ट दोनों हम बोल सकते हैं। The system of recommendation was ushered in. Okay, this system आया, usher in हुआ, but was के साथ word का third form चाहिए, so definitely there are two errors first and second में. This acted as what? An important supplement. Supplement जब किसी के लिए होता है, so we say supplement to ABCD, supplement to the system, exam system. Okay. Only three. Um, a good length, the lengthy ones. That's how I can explain. I can't tell you exact number of words, but हाँ lengthy होते हैं, and sometimes you get two of them, two RCs जब होते हैं तो भले ही short होंगे length में, but the complexity of the language, you are going to get some challenges there. I never say that you should depend on the length of the question. वो कभी हमारे काम नहीं आता. If it is just 5 lines and then the scenario is कि वो बहुत ही ज़्यादा tough है to understand in terms of vocabulary and what message it is conveying, आपका time उतना ही लगना है. Don't worry about it, just practice all kinds of questions. Okay, so here you had this sentence. Okay, we live in complicated societies structured around all these. So now you were supposed to give the similar meaning in one, like grammatically sahi hona chahiye, meaningful hona chahiye, and the same meaning should be conveyed over here. Political and first, prior to crack this, we live in societies. Now societies are structured around the processes. Processes generate massive something. So political and economic processes structuring complicated societies.
वेयर, तो स्ट्रक्चरिंग तो आ ही नहीं सकता, मेन वर्ब भी गायब है सेंटेंस में। द फर्स्ट सेंटेंस अपने आप में कितना गलत है, वेयर इज द मेन वर्ब, वेयर से तो एक्सटेंशन आ रहा है। एंड यहाँ तक तो यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस, दिस इज योर नाउन, वेयर इज योर मेन वर्ब। स्ट्रक्चरिंग के लिए तो कॉम्प्लिकेटेड यूज होगा नहीं, तो फर्स्ट आउट है, तो आपके पास तो इतने तो आउट ऐसे ही हो जाते हैं। Complicated societies where we live in and which are structured generate massive inequality and disconnection among us. Now, societies we live in tak to sahi hai, and these societies structured around political economic process bhi sahi hai, but processes generate the inequality ना, तो यहाँ societies generate हो गया meaning second वाले में, massive disconnection are generated, yes this we can say, by the processes, ये हम बोल सकते हैं processes that structure हमारी societies and societies जहाँ पर हम रहते हैं. So every bit, every phrase here in the sentence is connected with a specific detail जो उसके बारे में दी जा रही है, and we, it's such a question, we have to keep that detail intact. अगर बोला जा रहा है a girl studying in New York, and there is another boy who is working at Tesla, so you have to keep those details intact. वो boy के साथ में Tesla को पहले जोड़ेंगे, फिर girl के साथ में living in New York को पहले जोड़ेंगे, साथ में जोड़ेंगे. You cannot just do this question as match the column and any information can go with any subject. ऐसा नहीं कर सकते. That's why answer is only 3, the D1. I hope this question is clear. कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलो, we'll meet you guys tomorrow, same time, 1:30 p.m. and keep practicing like this. Make sure to like and share the session.